roi try. परमेश्वर की स्तुति हो। I praise and thank God. God gave me this opportunity to come from Punjab and share the word of God. Tiếng ai ngữ bằng cái roi play, lập play ngay cái cái lát banวันdo Punjab ban ya sam ya cái tin cái trong play hang này. पंजाब से आकर परमेश्वर का वचन बांटने का यह अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। Let us turn to the book of Colossians in chapter 1 and verse 16. Dengan phai cái Colossae cái là năng mà nâng công cái khát cái bạc khăn rìu. आइए हम हमारी शास्त्र को कुलसियों का पुस्तक पहला अध्याय का 16 वचन की ओर मोड़े। For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Nabahu la tau yagi e baro hagib deng pada kendo kike ki bala banyo I bad kike ki bomla banyo I lagi ket lene ki hima lene ki jingsen sha lene ki bor yagi e baro ke la tau da o bad ya o. Glory be to God. Long ka buram yu play. परमेश्वर की महिमा हो। So we are going to meditate on the last portion of this verse. Nghe nhớ pesan mentai ya ka benta ka bak khát du jang ni ka khat. इस वचन के आखिरी भाग में हम ध्यान करने वाले हैं। So in one book, I have not read that full book, but just on the first page, I have seen 3 questions were there. Dia ha ka wei ka kan. Wat la dang am chim la yo ban puli lut reng puli tang ya ka benta ka ba shakman ba nga pi I ka sla ka ban kong lightly ki dan ki benta. एक पुस्तक जिसको मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसके पहले पन्ने में मैंने 3 सवालों को देखा। So first question was that from where I have come. Thì cái ní cái lightly ki benta la ni ki jinkli ka ban kong ka long nang no ngalawan. पहला सवाल था, आप कहाँ से आए हो? And the second question was, for what I am here on this earth. Bat ka jinkli ka ba ka long naga daw ayu la ni naga benta ka e bang adan benta ka ni ka perthai. और दूसरा सवाल था, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? And the third question was, where I am going. Bat ka jinkli ka balai ka long seno ngan len. और तीसरा सवाल था, मैं कहाँ जा रहा हूँ? So this verse we have read is answering all these questions. Dek ni ka khat ka bang la puli kai ki jawab ya ni ki jinkli bhara. अभी हमने जो वचन पढ़ा है वो ये 3 सवालों का उत्तर हमें देता है। So God have created us. U blai u la thau yang ni. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, And as written in Hebrews chapter 12 and verse 9, that God is the Father of spirits. Bat kemba la thau ki Hebrew ka nang ka ba khat ar ka khandai ba u blai rong pa jang ka min sim. जैसे इब्रानियों 12 का 9 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्माओं का पिता है। And the book of Ezekiel chapter 18 and verse 4, it is written, all souls are mine. Bat ro la thau ki tin jang blai ba ba ro ki min sim ki long ki jang. और जैसे इसके 18 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, सभी प्राण मेरे हैं। So that we all have been created by God, and we all have been sent by God on this earth. Bat ka ni ka jo tu ba yang I ba ro la thau yo dau blai bat dau blai la pha ngi sha ka ni ka sla perthai. परमेश्वर ने हम सब की सृष्टि की और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हम सबको भेजा है। And there is a purpose of God for everyone. Bat ka dan ka jing thmu ka jang blai na ka mta I wei pi wei. सबके प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य है। So the purpose of God is this, that God is desiring for us that where God is dwelling, He wants that we also should dwell with Him eternally. Bat ka jing thmu ka jang blai na ka mta jang I ka long ka ta ka jing thrang ka ju ba ha ka ta ka jaka ka ba blai u dan ba du shong u kwa ba mangiru ngin dan hang ta ban long rangkat ba du junam la junam. हमारे बारे में परमेश्वर का यह उद्देश्य है कि जहाँ वो वास करता है, हम भी उसके साथ युगानुयुग निरंतर उसी के साथ वास करें। And we have been born in sins, so that's why we are not worthy to go that place. That's why we have to be on this earth. That so many things we should get rid of them, and so many things should be added to us. La khai ngi ha ka pom ban ngi em ngi la em ha ka pom
bagi dan sibun ke bangi hap ya ka bangin ino na ke chim ke jingi ba ka bangai na ka pom. हम पाप में जन्म लेने के कारण हम सीधे उस स्थान में जा नहीं सकते, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर रखा गया है ताकि उन सब बुरी बातों से हम अपने आप को शुद्ध करें और उस जगह के लिए अपने आप को तैयार करें. So God have created us, and with the purpose God have created us, and He have created us for Himself. Bat ublay deu blay bla thao yangi bat bla thao ru da kata ka jing thmu ka bakarpang bat kata ka jing thmu ka long ba ngin long ki jong ung. परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए हमारी सृष्टि की, हम उसके ठहरने के लिए उसने हमारी सृष्टि की है. And Psalms 19 and verse 1 we are reading there that God have created heaven, and heaven is declaring the glory of God. Bat akasam ka ba khat khandai ka khat ka baneng kong ni pule ba ublay bla thao ka baneng bat ki beneng ki pan bana ye ka buram ka jong blay. भजन संहिता 19 का 1 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आकाश को बनाया और वो आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है. And the firmaments reveals all the work of God. Bat ke sahit beneng baro ka pan pau ye ki kamba ki jingle ka jong blay. और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है. So when people see the heaven, sun, moon and stars, so the clouds and thundering and lightning, they are remembering God. Te ha baki breu ki khmi baki I ka beneng ya nai ya ka sngi ki khlor ya ki te ki ya porthan ya ki lo ki breu ki kanmao baki parkhach pau blay. जब लोग आकाश को देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, बिजली, गर्जन, इन सब चीजों को देखते वक्त वे परमेश्वर को स्मरण करते हैं. So same manner that we all have been created by God for His glory. Baraka jokor kamru yangi baro la thau do blay na kamanta ka buram ka jong. वैसे परमेश्वर ने हम सबको उसकी महिमा के लिए सृजा है. See that how God created Adam, but before Adam God created, He created many things for him. Bat ngi puli ka tino blay lo thau yo Adam dai shwa ye ka bon thau yo Adam u blay lo thau si bon ki na kamanta jong. जैसे कि परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, लेकिन उसको बनाने के पहले उसके लिए जो बातें जरूरत थी उन सारी बातों को उसने सृजा था. God created everything for Adam, but Adam was for God. Bat blay lo thau ye ki baro na kamanta Adam dai yo Adam lo thau na kamanta blay. परमेश्वर ने आदम के लिए सब बातों की सृष्टि की, लेकिन आदम परमेश्वर का था. And we see that Adam understood this, and how he and his wife, they were living for God. Bat ngai I kum no Adam lo so tho ye kani ma u bat ka tnga ka jong kila im na kamanta blay. आदम इस बात को जानने के कारण वो और उसकी पत्नी परमेश्वर के लिए जीवन बिताए. So till they were fulfilling the purpose of God, see that they were having rest, peace, joy, eternal life, all so many blessings they were having. Te kat bau Adam kalok ju kidang im hakata ka ban pendap ya ka jing thbu ba ka plan ka jong blay kan ki blay lo pendap ki da ka jing suk da ka jing kemen da ka jing jathan bar ki baro akata ka jaka. जब तक वे परमेश्वर के उद्देश्य को उनके जीवन में पूरा करते रहे, तब तक उन्हें विश्राम, चैन, खुशी, शांति दिखाई दिया. Same manner that for all of us also, this is the way of God, this is the purpose of God, that we all have been created for God, and when we are surrendering our lives, really we are having all the blessings of God which God is keeping for human beings. Te ka jokor kamru na kamanta jangi u blay lo thau yangi I we na kamanta jong bat kat bangi dang miteng ya ka ban pendam bat ban le ya ka ta ka man ka jang blay bai ka ban pendam ka jing thmu ka jong ngila ban mat bang yo ban le kemen ya ka jing kar khu ka jong baro ka chim ka jangi. और इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के सभी कामों को करते रहते हैं, उसी के मार्गों में चलते हैं और उसी के लिए हम रहते हैं और हमारे जीवन को उसके लिए समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई हुई सभी आशीषों को हम पा सकते हैं. So we should not take the things that just
I have come by chance in this world, and whatsoever I want I can do or I can live. This is the misguidance from our enemy. Ti ngim namar kata ka daw ngim day ya ka ban superkat ba ban simba ngala suka ngalawan sa kini percaya lakai nga kumtu bat bangala ban im ban lekat bangamon bar kini ki rukam perkat kilang ki ba unong syun jangi wan ya ka ban psu apo jangi. इसलिए हम ये नहीं कहना चाहिए कि अकस्मात मैं इस पृथ्वी पर दिखाई दिया हूँ, मैं अपने कामों को अपनी मर्जी के अनुसार कर सकता हूँ. ये हमारे शत्रु की ओर से दी गई गलत मार्गदर्शन है. But we should surrender our lives in the hand of God. Then God will guide us, teach us for what we are on this earth and what we should do. Ti ngidan kam ya ka ban IT la ka jong ka jim ho blay bau blay un tin un ya lam lenti ngi hakat bangidang im ga di ka pasai ya ka ka bangi ngidan kam ban le ka ni ka jingim. इसलिए हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना चाहिए. तब वो हमारी अगुवाई करेगा और हमें सिखाएगा कि हम इस पृथ्वी पर क्यों दिखाई देते हैं और उसी से हम आशीष पा सकते हैं. So when we are surrendering our heart, at once that God is taking control of us, all the blessings, His peace, His rest, His joy come in our lives, and God is started to take control of our lives. Dia bangi IT ala ka jang ki download ho blay simti ya ka jim ka jangi bat usdang ya ka ban trei ba dia ka ban yalam man tin nanti ka jim ka jangi ban yo ru ban yo pedang ya ka jing suk ka jing kemen ka jing jathai ka jing bai ka bon jai kita ka jing ka khu ka jim jangi. जब हम हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं तब वो हमारी पूरा जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और हमें खुशी, शांति, चैन, विश्राम इन आशीषों को देता है. So we should not doubt our Creator God. He is our Heavenly Father. He is loving Father, and always He is mindful of us. Ngim day lanu ru ban artatien yo blay nong thao jingi na mau long ukpa uba e yo jingi ulong ma uta utrai ba nong yalam ba ten nanti ka jim ka jangi. इसलिए कभी भी हम हमारे सृजनहार परमेश्वर को शक ना करें. वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा प्रेमी पिता है. हमेशा वो हमारे बारे में ध्यान रखता है. We see about Joshua, that how that he have decided, I and my family, we will serve God. Ni puli kumno sa pang Joshua bulakut jemut bolong mamanga baka yeng ka jang angin shakri yo blay. जैसे हम यहोशू के बारे में देखते हैं, उसने निर्णय लिया मैं अपने परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करूंगा. So those who decide like this, that God have created me, God have sent me on this earth, so I am for God, I will do His will, I am surrendering my life. So really that you become a very, very blessed person. Ti kitu ki balkut jemut kum ta bat ki basol tu de blay bula thao yang bat ngalong jong blay ka jong blay bat ki bak IT la ka jong ka jem ban le ya ka mon ka ju ha ka jem ka jong ki long kita ki breu ki bala kerkhu. और जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए सृजा है, मैं परमेश्वर का हूँ, और अपने आप को जब वो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं तब वो धन्य व्यक्ति ठहरेगा. If we are not surrendering to God, so at once our enemy come, demons come, devil come, and they started to misguide us. You are not serving your Creator, so you do our work. Telada ngim IT la ka jong ka jim ho blay ki nong syun jangi ki so kita ki bensim baman kin wan ya ka ban kren ngi ban namar ba phim le phim IT la di ban le ka mon ka jong blay pidan kam ban pendep ya ka kam ka jangi. जब हम इस प्रकार से परमेश्वर को अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं तो शत्रु शैतान हमारे पास आता है और गलत तरीके से हमारे मार्गदर्शन करता है. वो कहता है तुम सृजनहार परमेश्वर की सेवा तो नहीं करते हो, कम से कम हमारा काम करो. Sometimes that you may be sick because of this, that you are not understanding that God have created you for Himself, and you fail to understand that. That's why enemy is misguiding, and he is sending the sickness to you, and
he is making you, forcing you that you should serve the sickness. Kala ban long ba namar ba phim sim la IT la ka jong ka jing ho blay ba phim sim la so so ba de blay bra thao ye phi ba phi long ki jong blay pu kin long suan u wan ya ka ban ye le persyai ka jim jong phi ya ka ban pen pang pen sitam ye phi bat wong ba phin hap ya ka ban sekri ye ka jing pang. और कई बार आप इस बात को नहीं समझते हैं कि आप परमेश्वर के हो और इसके कारण आपको बीमारी आती है। शत्रु आपके पास आकर आपको गलत मार्गदर्शन करता है और कहता है और आपको इस प्रकार से मजबूर करते हैं कि आप उस बीमारी की सेवा करें। I know one family that they were going for namesake some church, and their church was failed. Afterwards, that family started to come to our church. Te ngai thu ya ka wei ka long yeng ma kum no ba ki la lech se ka jing ya ka jing seng je ki tang ki man supun dat ru kam ma kum no ki le khndu ki da ki jing ba ki sedang pat ya ka ban wan se ka balang ka jing. मैं एक परिवार को जानता हूँ, वे दूसरे नामदारी कलीसिया में जाते थे। जब उनका कलीसिया बंद हो गया, वे हमारी कलीसिया में आने लगे। And within few months, they brought a good news that last more than 15 years, that person, he was working in the government department, but he was temporary. But see that within few minutes, he got that news that he have been made permanent. But apo khandiat banai tang po khandiat singi ke klau yo ya ka khubor ka ba bo pa jong ta ka yeng bra trei ka kam sarkar la khasan snem ka basulang tang sipor ba la yo ya ka khubor ba la permanent ya ka kam ka jong. और उन्होंने इस प्रकार का शुभ संदेश लेकर आया कि वो व्यक्ति लगभग 15 साल तक सरकारी विभाग में वो तत्कालिक रूप से नौकरी कर रहे थे, लेकिन अभी जो है उन्हें स्थायी रूप से वो नौकरी मिल गया है। So now he have given the permanent job. Previously he was a temporary. Menta la ayu ka ta ka kam ka balong permanent mensua usu trei tang ka balong temporary. पहले उससे जो तत्कालीन रूप से जो नौकरी दी गई थी, अभी उससे स्थायी किया गया है। So many problems, sicknesses, so many things are there because because you are no sometime that you are not surrendering your life in the hand of God, and that's why that demons, devil, they troubled and they make so many things that you should be in this world without rest, without peace, without salvation. Kala ban long ba ma phiru namar ba phim IT la ka jong ka jim ho blay pi lan ye boman bat kita ki muslim boman bakin wan ya ka man ye le persyai phi ban pen pen khndu si bon ki jing e ka ki jing ka jong phi ki jing pang ki jing sam ba si bon ki ba phi sem ka jim jong phi namar ba phi phim sakri yo blay la ne phim IT la de ho blay. आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं करने के कारण इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारी, समस्या आपके जीवन में आ जाते हैं, यहाँ तक आप अपने उद्धार के अनुभव को भी खो बैठते हो। So it is not so that when you will surrender your life in the hand of God, at once you will be called for the ministry or for the gospel work. It is not so, but you will understand that how that whatsoever the purpose of God in your life, that will start to function in your life. Te la ra pi IT la ka jong ki jim ha yong blay kamut ba piun wan ya ka ban sekri noi u la ne ba pinap ban trei ben yalap ya gospel nrei gat musdan kam ya ka ban sok tho ya ka e ka plan ba ka jing smu ka jong blay ka jim jong pi bat pi IT ya la di u blay or snang pan sha shu ya ka jing smu ka jong ka jim jong pi. ऐसा नहीं कि जब आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करती हो, तुरंत ही आपको सेवा के लिए बुलाहट या सुसमाचार की सेवा करने के लिए बुलाहट नहीं मिलेगा, लेकिन उसी दिन से लेकर परमेश्वर का उद्देश्य जो आपके जीवन में है वो शुरू हो जाएगा। So that how a person can surrender his life to God, that his purpose may fulfill. So you should accept Jesus if so far you have not accepted. If you have not taken the right water baptism, you should take water baptism. Te
là da phi IT là cái trong cái chính em hậu ble bầu nu ba IT là cái trong cái chính em hậu ble un कर खुई cái chính em cái trong bat un pan pau hau ya cái cái jing temu ba ka man cái jing balada pat sim ya cái jing pan baptist ka bade sa sim ya cái jing pan baptist ka bade. इसलिए समर्पण करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। यदि आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है तो पानी का बपतिस्मा ले लीजिए। So in 1 Peter and chapter 3 and last verse we are seeing that those who take water baptism, so they are surrendering their life to God. Thế các bạn chỉ các bạn nâng con trong Petrus còn nâng các lại cái khát các bạn khát đua ni puliang tu bagi tu ki IT ya là cái trong cái gym ya hab man sim ya cái gym pan baptism ki IT là cái trong cái gym hậu ble. पहले पत्रस 3 अध्याय का आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं वे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं। So people, we have seen that after when they have taken water baptism, some people at once they got healed and they got so many good news, so many blessings. Tiếng y kumno ki brio hadien ba kila sim ya cái gym pan baptism ka bade shisha hadien kata ki yo sibon kita ki khubor ki babha sapang ka jing em ka jang ki ba kumjuru ki yo pdang sibon ki jing kerkhu. इसके कारण हम देखते हैं कि कुछ लोग बपतिस्मा लेने के पश्चात वे कई प्रकार की आशीषों को पाते हैं और उन्हें कई शुभ संदेश भी मिलता है। So you should give your heart to Jesus and you should take the right water baptism and you can see that how that God have come close to you, how that work of God have started in your life. Thì cũng ta IT là cái trong cái dono đầu Jesus, but sim ya cái trong pan baptism cái bade, but shisha pen samat badi kumno bau blay simti cái em cái trong phi, but kumno bau blay कर खुई पी. इसलिए आप उद्धार का अनुभव पाकर सही पानी का बपतिस्मा लीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में परमेश्वर का वो काम कैसे शुरू हुआ है। Because that in book of Jeremiah chapter 29 and verse 11 and 12 we are reading that how God is revealing that God is having a good purpose and that purpose is for all the goodnesses. Tiếng puli cái kitab Jeremiah kalau nang bar pundai kumno bau blay dan kita ke jing temu ke babhan ke benta jangi ba kumno bu pendam ya kata ke jing temu hangi. यिर्मयाह 29 अध्याय का 11 और 12 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हमारी प्रति एक योजना, एक उद्देश्य है, वो हानि का नहीं वरन कुशलता का उद्देश्य है। Please read this verse. Kat ke bakat we bakat ar soba puli ke new Jeremiah ar pundai lan. वचन For I पढ़िए। know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Namang tip ikaching mut ke ba ngakapar sa pang chong pi ang utray kiching mut kaching sukeng te om ki chong kaching snew man ai kaching kermen ya pi hakapor bakut chong pi chapin khor kerpat yanga pin yo lei banduwa yanga ngarungan sa skor ya pi. God is having the really very very blessed plan for your life. Oh, the shisha blay dan kata ke jing temu bar ka plan ke bla kerkhu nang benta ke jim jong pi. सचमुच परमेश्वर को आपके लिए एक आशीषमय योजना है। So till you surrender your life, that good purpose cannot fulfill in your life. Tetap ada ba pinda IT la ke jong ke jim ya kata ke jing temu ke ba bha ke jong blay endap ke jim jong pi. जब तक आप आपके जीवन को समर्पण नहीं करते हो तब तक वो अच्छा उद्देश्य आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। So sometimes you are not having guidance about your work also, and people have testified even they have surrendered their family, they have surrendered their business, like this they have surrendered their so many other programs and other plans in the hand of God, and they got the right guidance, and like this that the good plan was revealed to them. Ti ki dan ki brio ki bala ai ya ke jing pla ku ne ba wat ya ka kam ka jam ko jang ki ru namar ba kim dan ya kata ke jing alam ka badai shisha ki ke le kendo si bun ki jing kam ta ki IT ya la ke jang ke jing em ya ke yin ka sam ko jang ki ya ke kam ka jam ko jang ki ti ki jang blai bau blai hi uple ka lat ka lti na ka manta jang ki bau kerkhu ya ki.
कई लोगों को उनके उद्योग के बारे में सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को, हमारी भविष्य की सारी योजनाओं को, सभी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण किए हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर से मार्गदर्शन पाकर अभी हमारा जीवन आशीषमय हुआ है। Even some people that previously they are having that wrong baptism, not according to the word of God, and when their baptism was corrected and they took the correct water baptism, afterwards that they started to tell, oh yes, now we are enjoying the separate life. Previously also we were Christians, but now that we are feeling all the blessings, all the rest, all the joy, which is for the Christian life. Ki dan Gibril ki ba khamshim ya ke jing pan baptism ka ba dei bak kle kendo si bon ki jing e ke jim je ki re hadien bak la so thu sa pang ke jing pan baptism ka ba shisha ba hadien bak la shim ya ka ta ke jing pan baptism ka ba shisha ki la mat ya ka ta ke jing suk ke jing kmen ke jing cha tha ya ke jim je ki bak la ban ya pneng si bon ki jing ker khu hakim. जो लोग पहले गलत बपतिस्मा लिए थे, उसके बाद जब वे अपने जीवन को सुधार कर सही बपतिस्मा लेते हैं, तब उनको वो फर्क पता चलता है। वे कहते हैं कि अभी हम सही मसीही जीवन बिता रहे हैं, अभी हम आशीषमय जीवन बिता रहे हैं। So for the right water baptism, that first you should be separated from all your sinners, all your sinners friends. Ti nang kamanta ban pen sim ya ke jing pan baptism ka bedai kamen ko nge pidan kam ya ka ban pen kerpang le di naki nong pop naki perlok nong pop ke jang pi. इसलिए सही बपतिस्मा लेने के पहले ही आप आपके पापमय दोस्तों के से अपने आप को अलग करना चाहिए। And you should be separated from all the sins. Bat pidan kam ya ka ban pen kerpang ni le di naki pop baro. आप अपने पापों से अलग हो जाना चाहिए। So when you decide to serve God, then these sins they will leave you. Ti ha ba pi kut jung ya ka ban shu kriu blei kini ki pop kin ino no ye pi. जब आप परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करते हो, तब आप ये पाप सब आपसे दूर हो जाएंगे। We are reading one verse, Gospel of Luke chapter 11 and verse 23. Puli ka wei ka khan ha gospel Lucas ka nang ka khat wei ka khat ka bar phau. लूका का सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। Henry ladang ngabe no yiksoi daga senriakti ublay tigum tagi hima ga jong ublay kalawan hapi. But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. So the Lord Jesus Christ have told, those who are not with me, they are against me. Tiêu trai Giêsu ang ni bakitu ki bamdan kat ban nga kilang percaya nga. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। See this is the truth, that if you are with Jesus, so then you are gathering all the blessings, eternal life and all the things. Ti kani kalong ke jing sisa baladapi dan badu Giêsu pia pedang ye ke jing kerku baro bad ye ke jing bom jukut. ये सच्चाई है जो यीशु ने कहा है, यदि आप यीशु के साथ हैं तो आप अनंत जीवन और सभी आशीषों को बटोर रहे हो। If you are not with Jesus, so you are not gathering, you are scattering the things. Tela da pi pim dan rengkat bau Giêsu pim dan nakaliang kaju pi long ki pim pidol di kita ke baro. यदि आप यीशु के साथ नहीं हो तो आप आशीषों को बटोरते नहीं, लेकिन उन आशीषों को तितर बितर कर देते हो। And when we are reading this Exodus chapter 15 and verse 26. Abang puli ke Exodus kalnang ka bakhatsan kadkhar ka bar pun riu. जब निर्गमन 15 अध्याय का 26 वचन पढ़ते हैं, And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee.
but ul ong la dam isngap biang biang ru ya tin jong try ublei jong me bela dam men le ru ya kata ka bade khamat jong u ben men shash ko ru ya hukum jong u dag barkhe ya ginyam gurkom jong u baro ganam dabu hame ka wei ru ke na kita ke chingpang ya ka bangala wallam holor ki jem na ba mangang along try ba panim yeme. So new people, when they are reading this verse and they are asking the question, oh yes, God is also sending some sicknesses. Ti ki brio ki ba thamai habagi pulie ke ne khat kyang o ublei upha moi ki jing pang hangi. जब नए लोग इस वचन को देखते हैं तो वे सवाल करते हैं क्या परमेश्वर भी कोई बीमारी भेजता है? But you see that Luke chapter 11 and verse 23, those who are not with Jesus, they are against Jesus. Nengi pulie Lukas kal nang ka ba khat wei ka khar ka ba arpu lai bagi tu ki bamlan na kalyang ki jong Jisu ki lang ki tak bele persya Jisu. लेकिन जैसे लूका 11:23 में पढ़ते हैं जो यीशु के साथ नहीं है वे यीशु के विरुद्ध में हैं. So those who accept Jesus, those who obey His word, those who serve Him, those who worship Him, so they are with Jesus, and that God gave the promise that I am the God that healeth thee. Ti ki tu ki ba dan na kalyang jong Christ Jisu ki ba mani u ki ba shikli u ki ba ej u ublei u ai ki ka ta ka kular ba ngang along ublei u ba pen khya ye phim. और जितने लोग यीशु के वचनों को मानते हैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके साथ रहते हैं उनके लिए परमेश्वर ने इस प्रकार का वायदा दिया है मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ. But when you are not accepting me as your Lord, your God, your Savior, so then someone to whom you are depending or to whom you are believing, so that cannot heal, that cannot bless, that cannot give you the things which we are in need. Tin rei la da phem pdyang ni u ba kumu trai u jang phi phem shekri u ba phem umle ya ka man ga ju kamot ba phi pdyang pat ye no re no ki ba mla ya ka ban yarap e phi ba mla ya ka ban ai phi ya ka ta ka jing ya ki jing ker khu bat kum ju ru ya ka jing pen khya. यदि आप यीशु को अपना प्रभु होकर ईश्वर होकर उद्धारकर्ता होकर ग्रहण नहीं करते हो और किसी बात पर निर्भर रहते हो और विश्वास करते हो इस बात को याद रखिए कि वो बातें आपको आपके जीवन की आशीषों को प्रदान नहीं कर सकते हैं. So for God we have to do something, but for darkness and all these things we need not to do anything by force. They will come and like this they will capture us. Ti nei la da ngim le na ka man thau ble ki ta ki bo jang ki jing dum kin wan ngim don kam ya ka ban da khot ki le ni ban le na ka lyang ka jingi ki ta hi kin wan ya ka ban ker te we ringi bar kin persang ya ka ban yo kin ti ngi. वो शत्रु की शक्ति हम पर हावी होने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है लेकिन जबरदस्ती वो शक्तियां आकर हमें उसके नियंत्रण में कर देती हैं. See for light how much we have spent money and material, but for darkness need not to spend anything. That will when no light, when you deny the light, automatically by force that darkness will come. Kmi kum no na ka ban tha ban yo e ki ni ki light ban yo e ki ni ka jing sha ngi hap ya ban pulut pisa ban ka ban le sibun ki nei na ka ban ta ka jing dum ngim don kam ban le ru em tang la da kam don ka jing sha ka jing dum ka shuwan hi kum to. यहाँ पर रोशनी ले आने के लिए हमने बहुत सारे पैसों का वस्तुओं का खर्चा किया है लेकिन अंधकार के लिए कुछ चीज की खर्चा करने की जरूरत नहीं है. जहाँ पर रोशनी या प्रकाश नहीं वहाँ अपने आप अंधकार छा जाता है. So that's why that where there is no place for God, for Jesus, for light, then all the enemy forces they will come and if anyone call or not, and they will come and capture. Ti dei ga ne ka rukam kan balada ngim dan jaka yau blei yau Jisu ye ki ba dei ki jong blei ba ye ka jing shai ki dong nong shun ki wan ye ka ban kum tu hi ye ka ban ye le ngi bat ye ka ban persang ban yok kan ti ngi. इसलिए जहाँ पर परमेश्वर या यीशु के लिए कोई जगह नहीं कोई स्थान नहीं है अपने आप वहाँ पर ये दुष्ट शक्तियाँ या बुरी शक्तियाँ आकर उस बात को नियंत्रण में ला सकती है. See that that's why
this promise have been given. I am the Lord that healeth thee. Đây là cái cái đau bala ai cái cái kular ngalong trai ubapan kia IP alni ubapan ni mefi. इसलिए वायदा दिया गया, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ. You, if you are accepting His love, so you will start to feel the healing and all other blessings, all deliverance, all whatsoever things are there troubling you. All those things will go away from. Thế là đã bị penang yêu trai bây giờ cái chuyện ý cái chuyện pin yo penang na u ya kata cái chuyện pen kia ya kata cái chuyện pelai, ba pin yo ru ya kata cái chuyện pelai lu na kita ki baro ki wan ya kaban pen cordet ya kaban pen sistem jumut ifi. यदि अभी आप उसके प्रेम को ग्रहण करते हो तो आप उनके आशीषों को अभी से अनुभव कर पाओगे, और जो बातें आपको सताती हैं वो बातें दूर हो जाएगी, आपकी बीमारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी. See that in Garden of Eden, how that God created everything for Adam and Eve, and they were serving God. Bạn nghĩ pulia kum no ha ka pet Eden na din bo blay lo thao yo Adam bari ka im bari ki baro na ka manta janki kila shakri yo blay. जब हम अदन की वाटिका के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ प्रदान किया और वे परमेश्वर की सेवा करती आए. Sometimes people are asking that why that this Adam and Eve they fallen. Ti dan ki brio ki bakali balay bu Adam bar ka im ki laham no. कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि आदम और हव्वा क्यों गिर गए. The reason is this, that because that God have created human being with the free will. Ti ka daw long bau blay lo thao yo brio rangkat baka man ka balay luñ. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसानों को सृष्टि की तो उनको अपने आप चुनाव करने का अर्थ भी दिया. So that's why that in Deuteronomy chapter 30 and verse 15 and 16 and verse 19 it is written that I have kept before you life and death and cursing and blessing. Bat day na makata daw ngi puli haki Deuteronomy kalanang ba khalai kit khat ki ba khalai khasan khat kana kum no ba blei wang ngala bo a khamat yang phi ya kita ya ka jingim ba ya ka jingyam ya ka jingkerkhu ba ya ka jingtim. इसलिए व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 15 और 16 वचन में पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु को रखा हूँ, आशीष और श्राप को रखा हूँ. 30 Kalanang balay po. 30वां अध्याय का 15 और 16 वचन. And 19 verse also we see there that how that God have kept all the things before human beings, and that He desiring that you should choose the life, the good things. Ti ka no ka balay po khat khasan khan rio ka khandai kum no bo blei ula bol ki baro a khamat jang brio ba ya ka jingim ba ya ka jingyap ya ka jingtim ba ya ka jingkerkhu ba kum no bo brio hiu dan ka banjie dala de ya ki ba ba. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15, 16 और 19 वचन में इन बातों को हम देखते हैं. परमेश्वर ने यह सब आपके सामने रखा है और वो यह चाहता है कि आप सही और ठीक चीजों का चुनाव करें. So in the Garden of Eden we see that God was coming and preaching life to them. Ti puli ha ka per den kum no ba u blei u wan hakini ki arngut ya kaban keren berki ya kaban baniato berki bari kaban yalap ya ke je maki. अदन की वाटिका के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर उनके पास आकर उनके साथ जीवन का प्रचार किया. And that devil also was coming, serpent also was coming, and he was preaching death. Tiu Satan ruwan ubsen ruwan ya kaban yalap aki bat ya kaban maule ru ya kachang. लेकिन शैतान सर्प के रूप में आकर वो मृत्यु के बारे में प्रचार करते रहा. 2 Corinthians and chapter 11 and verse 3 we are reading. Hakabar ki karen kal nang ka khadwei ka khar ka balai ngi pulim. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 3 वचन में पढ़ते हैं. Read please this verse. But I fear lest by any means, as a serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. And ring a shifting ya ba kumno ru kumbau top saying ra shukor ya ka im da ka bui sien bomman jungu bar kumta on pen put plak ya ka chungmu jongpi nagata ka ba shi senram sem bar kata ka jisnur ka ba ha ukris. So death was with devil.
Dia ke jiap kalau dan batu setan. मृत्यु शैतान के पास दिखाई दिया And this death was injected in Eve and Adam. Banyak kan dia ke jiap la beso la inject hakai embat kumjuru hadian hong Adam. और ये मृत्यु को आदम और हव्वा के भीतर डाला गया. So what is the nature of this death? This is the as we are reading in 2 Corinthians chapter 11 and verse 3, death, or we can say rebellion. Dia ke jing long jangan dia ke jiap kumangi puli haki baar ki keren kawai nang kat ka bakalai ke jiap kalong kata ke jele persya. ये मृत्यु का गुण क्या है? जैसे दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में हम पढ़ते हैं, हम इसे मृत्यु कह सकते हैं या फिर हठीलापन कह सकते हैं. So we see that how that this serpent was preaching rebellion, and Adam and Eve, they rebelled against God. Tinggi ikumno bau setan wan mentaban yalap siapang kata ke jing yap ke jing le persya hak Adam berkeim ban kira kongo berkele persya yo blame. शैतान जो है आदम और हव्वा से बलवा करने के बारे में प्रचार करता रहा और आदम और हव्वा परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किए. So in Romans chapter 5 we are reading about that how that death is ruling. Dia kinang Rom kalau nang basan ni puli kumno kata ke jingap ke sinsyar. रोमियो 5वां अध्याय में पढ़ते हैं कि मृत्यु कैसे राज्य करती है. Chapter 5 and from verse 12 to I think 21 we read how that many types of death is written there. Dia kinang Rom sana nang ledo khada do arpue ni puli kimno kita ke jingap ki babunjat kita ke jingap ki dan lagi sinsyar ne. रोमियो 5वां अध्याय का 12 वचन से लेकर 21 वचन तक हम देखते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार की मृत्यु के बारे में उल्लेख किया गया है. So now this death have entered into the world in all the people, all the nations. Balung ba jongki kata ke jingap ka rung ha ka porthai bakliya bandung ha ki briu bara bagi jai benriu bara. अभी ये मृत्यु जो है सभी लोगों में, सभी राज्यों में, सबके भीतर प्रवेश किया है. So that's why you can see this rebellious nature everywhere, that in all the people this rebellious nature is working. It is prevailing, and this rebellious nature is controlling the people. Dai nai re ka daw bang I ka porthai ka leng sat la ka porthai kini ke jinglong bele persya ka sansyari ki briu baro ba kani ke jinglong bele persya menta ka dan haki jaka baro haki benriu baro. इसलिए हम देखते हैं कि हर जगह में सभी लोगों में ये बलवा करने वाली आत्मा काम करती है. ये बलवा करने वाली आत्मा उनको अपने कब्जा में रखकर उन्हें नियंत्रण करती है. So a serpent preached in the Garden of Eden, and death entered in human beings. Tiu su sen ulayalap agak pereden bat ke jiap ka rung hau benriu baro. सर्प अदम की वाटिका में प्रचार किया और मानव जाति के भीतर मृत्यु प्रवेश किया. And in 1 Corinthians and chapter 1 and verse 21 it is written, now by preaching that God is saving the people. Kal nang ka benengkong ki karen kal nang benengkong kat kar ka bar kuai bang menta dang ba kata ke jialap kumno bau blai upenem ye ki briu. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 21 वचन में हम पढ़ते हैं कि अभी हम प्रचार करते हुए लोगों में विश्वास उत्पन्न करके उनको उद्धार देते हैं. So by preaching death entered in Adam and Eve, and now by preaching preaching of the word of God, that people are receiving life. Tidak ka jing yalam haka per eden ka jong busen ka jiap kala rung ki briu ba menta da ka jialap ya ka gospel ya ka tin ka jong blai ka jingem kala yo ya ka banwan na ki briu baro ba ki briu ki yo ban pedeng ya ka jim. उन दिनों में जब आदम और हव्वा से प्रचार किया गया तो मानव जाति में मृत्यु प्रवेश किया. लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं और जब लोग उससे ग्रहण करते हैं तब हम देखते हैं कि वे उद्धार पाकर उनमें जीवन उत्पन्न होता है. See this Corinthians chapter 1 and verse 21. Bat ni puli ni ka benengkong ki karen kala nang benengkong kat kar bar kuai. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 21 वचन. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
namar bahaga jing star play kataga pate dala ga jing star kamsham la ito yaw play oblay la ibit daga jing ibe jing yalap ban pendim ya kata kibangai. And what is the preaching? Tei kata ka jing alam. यहाँ पर क्या प्रचार किया जाता है? Read verse 23. Boleh kat khar kabar pulai. 23 वचन पढ़िए. But we preach Christ crucified unto the Jews as stumbling block, and unto the Greeks foolishness. And ringing yelap ya ukris balasanar pna hagi jiu te haga jing chen ton bagi create hagi jing ibe. So in this world now that two platforms are there for the preaching. Dia hagne ka percaya kita atli kita ke rinsan na kamanta ka jing alam. इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रचार करने के दो मंच दिखाई देते हैं. One is the church. Awai ka dei ka balang. एक तो कलीसिया है. Church is the platform for the preaching of the word of God. Bad ya ka balang na pusing ban yalrap ya ka tien ka jang blame. परमेश्वर का वचन का प्रचार करने के लिए कलीसिया एक मंच है. And that world is another side. That is all the platform for the preaching of the death. Baka percaya ka dan sah kawai pakalyang baka taru kalang kata ka rinsan ka bayalap ya ka jiam. लेकिन जो संसार जो है वो मृत्यु का प्रचार का मंच है. So that's why two institutions are there in this world. One is the church and other one is the world. Bad namar kata ki dan atli kita ki ek ka ni ka percaya kawai ka ni ka balang baka kawai pakari ka percaya. इसलिए हम इस पृथ्वी पर दो संस्थाओं को देखते हैं. एक कलीसिया है और दूसरा संसार है. The person who is in the church, he will not be in the world, and the person who is in the world, he cannot be in the church. Ubriu ubadan ha ka balang unumla bandan na ka percaya ba ubriu badan na ka percaya unumla banwan bandan na ka balang. जो व्यक्ति कलीसिया में है वो संसार में रह नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति संसार में है वो कलीसिया में भी रह नहीं सकता. So that's why you should hate the world and you should love the church and you should join the church. Dari namar ka ni ka daw pi dan kam ya ka ban isi ya ka percaya ba ya ka ban ya ka balang ba ya ka ban dan na po ka balang. इसलिए आप संसार से घृणा करते हुए कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया में सहभागी हो जाएं. So when you repent and receiving the forgiveness of your sins and taking right water baptism and receiving Holy Spirit, so in this way you are joining the church. Bat namar ka ta haba pi kala ka babon nagi pop ka jang pi apdeng ya ka ta ka jimma ba ka jing penem ba pisim ya ka jing pen baptism ka badai ba ya apdeng ro ka jing pen sla ka jang muslim ko pi dan ba pi shong na po ka balang. जब आप पश्चाताप करते हो, पापों की क्षमा पा लेते हो, सही बपतिस्मा लेते हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हो, तब आप कलीसिया के अंग हो जाते हो. So this church have been built on the foundation of the apostolic doctrine and fellowship. Taka dan ka ta ka balang ya ka ba te halor ki jing hikai jang ki apostol bat ki na thul pa. ये कलीसिया जो है ये प्रेरितों का उपदेश और संगति इस नींव पर बना हुआ है. So when you are understanding the truth and you are receiving the truth and you are believing in this consecrated ministry, so you come to the right place, you come to the right platform. Te haba pi ya snow ya ka jing shisha pi pdeng ya ka jing shisha ba pi IT le di hapo ka ta ka jing shakri ka bla pen kentang le di kama pi dan menta ha ka ta ka rinsan ka bade. जब आप इस सच्चाई को जानकर सच्चाई को ग्रहण करते हुए इस प्रतिष्ठित सेवा को प्रेम करते हुए यहाँ पर आते हो, तब आप सही मंच में पहुंच गए हो. So one person, he received the salvation. He was not knowing anything about Christianity, but some Christian friend might have told that if you believe in Jesus, Jesus can do wonderful things in your family. Tiu dan we breu ubla preng ya ka jing penem putip ya ki ru ki bade sepang ke jing Kristan ne rasul tu bau ya preng ya ni ka kubo na ki perlok Kristan ki ju bang ba la da pi preng ya Jesu gum nong penem nong sus pa jang pi pin ya ka jing penem ba ublen कर खुई pi ba ka yen ka sam ka jang pi. एक व्यक्ति जो मसीहत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसने मसीह को ग्रहण करते हुए वो मसीह बन गया, क्योंकि शायद उसके मसीह दोस्त उनसे बताया था कि यदि आप मसीह को ग्रहण करते हो तो आपके परिवार में आप आशीष पा सकोगे. He got a blind son and all the relatives, they suggested
this child will suffer whole life. So it is better that you ask the doctors, they will give some injection and now itself it will die. Bat ula yo ia khon sin rang uba malla bat baro ki bahieng ki basem ju yang ba uniu khon ya phi un malla shifta jingem bakum ta ka khamba ya phi ya ka ba phin nit man kat pa di doctor bakin I injection you bat bun yam no. और उनसे एक अंधा बच्चा जन्म हुआ तब लोग सब उसे ये सलाह देने लगे ये बच्चा तो जीवन भर कष्ट उठाएगा इसलिए यदि आप डॉक्टरों को अभी कहते हैं तो वे लोग इंजेक्शन देकर उसे मार देंगे. But this person believed Jesus and like this he started to pray in his house and in his city where he was dwelling 27 churches were there. Te uniu brio sem kau ngoi ka ta namar bau langit eu Jesu bawas nang ya ka banduai eu Jesu ka yeng ka sem ju bat ha kata ka nong ba ha kata ka snong ka bau dan kidan arpunya utli ki balang. लेकिन ये व्यक्ति मसीह को विश्वास करते हुए अपने घर में प्रार्थना करते रहा. जिस शहर में वो रहता था वहां पर 27 कलीसियाएं थे. One day in the dream he was guided that he have come to that our Center Faith Home in Punjab and he have seen sisters how they were doing the things in the faith homes. So he got the guidance. Oh yes, this is the church that God have guided me. I should come here for the fellowship. Te ka wei ka met loi I ya ka jing pos new ya ka yeng mani ka jang ya ka Center Freedom jang ya po Punjab ba ka ta ka jing pos new loi I ya ki sister kom no ki tre ki kam ki jam jang phi ba ra bu lawan wang de shisha hang ne ken ya de hang ne bo blai wan ya ka ban ya lam ya ba ka ne ka de ka balang ka ba de shisha. एक बार स्वप्न में उसने पंजाब में हमारे केंद्र विश्वास भवन को देखा और वहां पर सेवक भाई बहनों को भी देखा और तब उससे पता चला कि परमेश्वर सही कलीसिया की ओर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और इस प्रकार से वो आकर कलीसिया में शामिल हुआ. So dear beloved of God, this is the will of God that you should join the church and you should hate the world. Bat kam ta ko ki khon bi jang ble ka de ka mon ki jang ble ba pi dan kam ya ban pnya so ba ka balang ba ya ka ban isi ya ka perthe. और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप संसार को घृणा करते हुए कलीसिया में सहभागी हो जाएं. So this world is preaching the rebellion. Te ka ne ka perthe ka ya lap ya ka je le persha. ये संसार बलवा का प्रचार करता है. So see, that's why in the family, boy or girl, always they are having this nature of rebellious and always they rebel against father and mother. Te namar tangi I war ki yeng ki sem ki dan kita ki khan ki khon la la balong semang ne ka kan thai ki bai le persha bar ki bam ko ye ki kme ki pa ki jang ki. इसलिए हम देखते हैं कि एक परिवार में बच्चे जो चाहे लड़का हो या लड़की हो उन्हें बलवा करने का स्वभाव होता है. वे अपने माता पिता के विरुद्ध में बलवा करते हैं. Wife is rebelling against the husband. Bat ka lok ru ke le persha yo lok. पत्नी पति के विरुद्ध में बलवा करती है. And people, those who are working in their offices, in their places, they are having only this nature. They always, in time and again, they are rebelling. Te wat ki bre ki batre ki office pa ki jaga tari kam ki jang ki ru ni I kata ka jinglong ki ba barbor ki dan kata ka jinglong banyele persha. जो लोग दफ्तरों में कई संस्थाओं में काम करते हैं हम देखते हैं कि उनमें भी ये बलवा करने वाली स्वभाव है. But see that in the church, that life have been preached. Tendai kmi haka balang ya kata ka jigem le lam. लेकिन कलीसिया में जीवन का प्रचार किया जाता है. Who is this life? Mano balang ka ne ka jigem. ये जीवन कौन है? Jesus is the life. Jisu long ka jigem. ये जीवन यीशु है. So that's why it is written that preachers, they went and they were preaching about Jesus. Dei nama kata ka rao la tho ba ki ta ki no yelap ki yele ban yelap sa pang Jisu. इसलिए लिखा गया कि प्रचारक जाकर यीशु के बारे में प्रचार करते रहे. In Corinthians just now in verse 23 we have read that we have preached crucified Jesus. Te haga banungkang ki karen nanang banungkang arpulai ka khat ni apuli mentan ba ni yelap yo Chris wa sa narfana. जैसे हम पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय का 23 वचन में अभी पढ़ा कि हम क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं. How Lord Jesus Christ have destroyed death by his death.
kum no bo try Jesu ula pendut theo ya ke jiap da ke jiap kajau. कैसे यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा इस मृत्यु को नाश किया है। So Adam and Eve, they received the death because of this because of this rebellious nature. Tiu Adam berkeim kiamat ya ke jiap namar berkel pedang ya kata ke jenglong ke bele persya bagi dan ke jengele persya ki. ये बलवा करने वाले स्वभाव के कारण आदम और हव्वा इस मृत्यु को अपने जीवन में ग्रहण किए। So because of this nature, this death is ruling, this death is working, and that's why all people are having death in them. Bat day namar ke ni ke jenglong bele persya bagi jiap mentaka संसार ya ki ka dan ki bat baur ki breu ki dan ya ke jiap ki. ये बलवा करने स्वभाव के कारण मृत्यु राज्य करती है और सब लोगों में ये मृत्यु समाया गया है। So as John the Gospel chapter 17 and verse 3 we are reading, and this is life eternal, if they know God and they know Lord Jesus Christ. Ti gospel Yohanes kalong bakhan nyaw la tho ba kini kin kalong kata ke jim bom yukut la da kini thu yo blay bar kini thu yo try Jesus Christ. यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 3वां वचन में हम देखते हैं कि जो सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानते हैं अनंत जीवन वही है। So that we should have the knowledge about Lord Jesus Christ. Tingi dan kam ban don kata ke jing tip sapang try Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। See that when he have not started his ministry till the age of 30. It is written in Luke the Gospel chapter 2 and verse 51 that he was under the subjection of his parents. Ti tat nda ulas dang ya ka ban trei ba ban yalap ya gospel nda wadap life post nam how Lucas ni puli ba ula dan na po ula pendam ne di hak bala pen kongoi le di ki kmi ki paju tat ado ka por. यीशु मसीह ने अपनी 30वीं उम्र तक अपनी सेवकाई की शुरुआत नहीं किया। लूका का सुसमाचार 2वां अध्याय का 51 वचन में लिखा है कि जब तक उसने अपनी सेवा का शुरुआत नहीं किया तब तक वो अपने माता पिता के वश में रहे। See, being God, he was in the human body, but he is God. But see that how to teach us or to destroy this death, he gave us the example. He gave the example to all the young people and all the youths that how they should be under the control of their parents. Ti wat lau dau ula long ublay try Jesus ula sim ula dan na kani ka ula sim ya ka ka dor ka jang breu ba ya ka ka jang long breu nama bu kwa ya ka bani kai ngi bano kwa bani kai gi samla gi khna kom no gi dan kam ya ka ban pendam ba ya ka ban pen kaungo ila de ki kme gi pa gi jang ki. वो मानवीय रूप में होने से भी वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन वो हम सब लोगों के लिए, सब जवानों के लिए, बच्चों के लिए एक आदर्श ठहरा कर गया है। जैसे वो अपने माता पिता के वश में रहे वैसे हम भी वश में रहे। So if you will suffer with Jesus, if you will die with Jesus, then only you will resurrect with Jesus. Tila da pi ai ti la jang ke chi ma Jesus bala pi yam rung khat bo Jesus de tang kum tha ba phin sa mi pat ru lam ba ru Jesus. यदि आप यीशु के साथ कष्ट उठाते हो, दुख उठाते हो, तब वो उसके साथ जी भी उठेंगे। See how Lord Jesus Christ, when he started his ministry, how that he have not done his own will or self will. Tingi pulia kumno bo try Jesus men bau dang sedang ya ke jing sekri ke ju dan kata-kata ka man ladi lani ban pendep ya ka e ke bo khla ya ka e ka man ke ju. यीशु के बारे में हम ये देखते हैं कि वो सेवा करते वक्त कभी भी वो अपनी खुद की इच्छा को नहीं किया। And joyfully, happily, he was doing the will of God. Bada ka ba da ka jing kemen ke jim yu la le ya ka man ke jang blame. लेकिन वो बहुत ही खुशी के साथ परमेश्वर की इच्छा करता रहा। John the Gospel chapter 10 and verse 17 and 18 it is written. How Johannes Paul nang khat khan nyo bar kha phra la tho. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय का 17 और 18 वचन में इसके बारे में लिखा गया है। So he is telling that Heavenly Father is loving me because happily I am giving my life. Bau ong hang to ba u pa ba bneng ku i jangan nama da ka jing kemen na le ya ka man ka ju bangai si la ka jong ka jim.
वो यहाँ पर कहता है कि स्वर्गीय पिता मुझे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपने जीवन को खुशी के साथ समर्पण करता हूँ। And it is written that it is not someone is forcing me or Heavenly Father have forced me that you should go and die there. But no one have forced me. But happily I am giving my life. Thiên rây ula thoru ba kumno da ka ba kemen ula IT la ka jog je dan manu ba pen bori war pa jong u ba benang ru sam la pen bori unde daladi da ka mansro ba ula IT la ka jog je मेरे स्वर्गीय पिता या और कोई भी मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन खुशी के साथ मैं अपना प्राण समर्पण करता हूँ। So you have been given the free will, but your free will should be surrendered happily to do the will of God. ha ya piru la ai ya ka man lai lui nei pi dan kam ya ka man IT ya ka man lai lui jong pi ya ka ban le ya ka ban ke jong ble आपको जो अपनी खुद की इच्छा करने का हक तो दिया गया है, लेकिन आप अपनी उस इच्छा को समर्पण करते हुए परमेश्वर की इच्छा करना चाहिए। So happily when you are doing the things for God, so God is loving all such people. bat da ka ba kemen la pile ke na ka men ta u ble e ke ba kum ki ta ki breo जितने लोग खुशी के साथ अपने आप को समर्पण करते हैं, परमेश्वर उन सब लोगों से प्रेम करता है। So once I was very sad and being a servant of God, one senior servant of God, he told me that no brother, happily you should serve God. te Christian na ka wi ka pa nga rasno si do kata man ba nga la sekri u ble ba dan tau sekri jang ble ba kham lor jang a bong em brother pidan kam ya ka ban sekri u ble da ka jing kemen मेरी सेवा के दौरान में एक बार मैं बहुत ही दुखी हुआ, तो और एक सेवक भाई ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा नहीं, आप खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। So that when happily you are worshipping God, when happily you are suffering for God, when happily you are walking in the way of God, really that God will love you and really God will fulfill all His purpose in your life. te la da shisha pi e da ka ta ka jing kemen u ble bat da ka jing kemen pi sekri u ble ba da ka jing kemen pi le ka man ka chu u ble un e ye pi bat un pendap ya ka jing tmu ka bula tmu ya ka jing em ka jang pi happy जब आप खुशी से परमेश्वर की दंडवत करते हो, उसके लिए कष्ट उठाते हो और उसके लिए अपने आप को समर्पण करते हो, तो सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा और आपके जीवन में उसके उद्देश्य को पूरा करेगा। If anything you have done forcibly, you should ask pardon. Just now, you should ask pardon, and God, you will see that the love of God will come upon you. bala da ka dan ka e ka nu nu le ka e ka ba pi le da ka ba chu pen bo ri pi dan ka menta hi ban kala ka mut ba ban pan ma no ble ba de shisha pi sai i ba ka jing e ki jang ble kan pen dap ye pi यदि आप इसके विपरीत में कुछ किया है तो आप परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर आपको माफी देगा और उसके प्रेम को अपने दिल में डालेगा। So happily those who are walking in the truth, happily those who are doing all the things of God, Holy Spirit take control of them. Always that presence of God, they feel that presence of God is with them. te la da ka ba kemen ki to ki ba e yo ble ki to ki ba le ka man ki jang ble ki to ki ba ya ran kat na ba ble da ka ba kemen pin i ba ko no ba ble ru u pen dap ya ka jing dar kat ka ju ya ki ba bor kin ya so ya ka jing dar kat ka jang ble lambat ki जो खुशी के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, वे महसूस करेंगे कि पवित्र आत्मा को उनका नियंत्रण लिया है और पवित्र आत्मा आप ही उनका अगुवाई कर रहा है। See that this is the life if we know about Jesus. te ka ne kai ka de ka ta ka jim la rangi tip mangi thu yu jisu यदि हम यीशु के बारे में जानकारी पाते हैं तो इसी प्रकार हमारा जीवन होगा। How that Lord Jesus Christ have destroyed death with His death. kemo bo tra jisu ula pendo ba penjat thiau ya ka jiap lang ba ka jiap ka jago हम कैसे जान सकते कि यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु को नाश किया है। So what was the weapon He used? te ka e ka ta ka ba ka atyar ka bo punan kam उसने कौन से हथियार को इस्तेमाल किया। See that this weapon we should know and we also should try with this weapon.
Bang idon kam ya ka mantep ya ka sapang ni ka hatiar ba bangiru idon kam man pendon kam ya ka. हम भी इस हथियार के बारे में जानकारी पाकर उसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। Philippians and chapter 2 and verse 5 to 10. Filipi kalau nang ka baar kit khat san hado sipau. फिलिपियों दूसरा अध्याय 5 से लेकर 8 वचन। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Okay, enough. So we see that this is the weapon of Jesus. Tingi pule ni sapang ni ka hatiar ke jauh Jisu. ये यीशु का हथियार था। So he emptied himself. Ulapan sudai lah dia. उसने अपने आप को शून्य कर दिया। So when we are emptying ourselves, Dia bangiru ngi pen sudai lah dia. जब हम अपने आप को शून्य कर देते हैं, so what will be the nature? What type of nature will be revealed? Dia ka bakumno kata ka jinglong pen pen pau. तब कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? In Yeshaya chapter 53 and verse 7 we are reading that he did not open, he oppressed but he did not open his mouth. Teu Isaiah kal nang ba san pulai kat kar ka banyau ngi pule la ban pe nyu ndre shimla ang la ka center. यशायाह 53 का 7 में हम पढ़ते हैं कि वो सताया तो गया तो भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। And in Yeshaya chapter 50 and verse 5 and 6 there also we are reading that is written about Lord Jesus Christ. Teu Isaiah kal nang ba san po kat ba san ban riu hang turu la tho sapang Christ Jesus Christ. यशायाह 50 अध्याय का 5 और 6 वचन में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। Please read this verse. Sebab pule Yeshaya 50 and verse 5 and 6. Isaiah san po la nang kat san ban riu. यशायाह 50 5 और 6 वचन पढ़िए। The Lord God had opened my ear, and I was not rebellious, neither turned away back. I give my back to the smiters and my cheeks to them that pluck off the hair. I hid not my face from shame and spitting. Utrai uble ula play ya skor jonga tingam shem lakya lamne phaiden no ngalapen sha ya lag ingdong ha kinong sempan but agingap ha ki baput ya usnyo ngam shem labure ya lag khmat na gajingle rai but kajing bentiu. See that he have not opened his mouth. Shimla ang la ka center. यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। In force, people are telling that in force or army there is no chance that anyone cannot argue. If anyone is arguing, that it means he is unworthy to work in the force. Dia pedeng ke ini ki kanun sipai ki force kamut ba umsa ya no ya kaban ang ya ke center ban keran persya lani banyanya ya mai namar la daule kanta mumlong ba Vietnam ban trei ya ke kam sipai. ऐसे कहा जाता है कि जो सैनिक सेना में जो भर्ती होते हैं वे लोग किसी बात के लिए वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। यदि वे वाद विवाद करते हैं तो वे सेना में काम करने के लिए योग्य नहीं ठहरते। One army man was telling, in our barrack it is written, there is no question why, but to do and die. Te hak wei usipai ule thui nga ba hakataka barak kataka jaka ka bagi sang la tho dan kam ba pen kali jingkali eru ndai ba pen shule ba pen IT ban yam. एक सैनिक ने इस प्रकार से कहा कि ऐसा कहा गया कि हम कभी भी क्यों इस सवाल को पूछ नहीं सकते, चाहे हमें उस काम को करके मरना भी पड़े। Whatever command have come, they cannot ask that why, but they have to do. If they have to die, they should die. Te baka wan kanu kum kimla ban kali jingkali balai ndai kan hamp ya ka ban le ya ka ta bat wala ka dei ki ban yap ki dei ban yap. जब उन्हें कोई आज्ञा दी जाती है वे क्यों इस सवाल को पूछ नहीं सकते, उस काम को उन्हें करना ही होगा, चाहे मरना है तो मरना भी पड़ेगा। So this is the weapon of Jesus. Jesus used this weapon and he surrendered his life and he obeying the commandment of Father and he gave his life. Dia kini kaya kaya kita ka atyar ka bau Jisu ulapan dan kam Jisu ulapan dem ulapan sudai la dia ulapan dem la dia ka man ka jauh pa bau la IT la ka jauh ka jem.
यीशु ने इस हथियार का इस्तेमाल किया। जब उसको आज्ञा दिया गया तो सवाल न करते हुए पिता की उस आज्ञा के लिए अपने आप को उसने समर्पण किया। In Philippians chapter 2 and verse 14 we are reading that we also should not argue, and we should do the things, we should do the work without murmuring or without disputing. Dia ki Filipi kalau nak bahar ke dekat bahasa atau tu memangiru ngidai banle ke johi ngidan ka manle ke bara klam kijing kenyum klam kijing enia andai bansipun kongo baik. फिलिपियों दूसरा अध्याय का 4वां वचन में हम पढ़ते हैं, जो काम हमें सौंपे जाते हैं बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के उस काम को हमें करना चाहिए। See in Exodus chapter 16, there in verse 8 it is written that how Moses, he was telling to the Israelites, see, you are murmuring on us because of that no water, no bread, but you are murmuring. But this murmuring is diverting to God. It is reaching to God. Te hagi Exodus kalau nak bahkan beliau ki pulia kuno mau Moses long ki kon Israel namar bapim yo jeng bam bapim yo yang kedua pi kenyam percaya ini kata ke jeng kenyam percaya jo pi yang ini kamlong yang ini dari kalipai sebelah. निर्गमन 16 अध्याय का 8वां वचन में मूसा इस्राएलियों को कहते हुए ये कहता है, जब आपको रोटी और पानी नहीं मिलते हैं तुम बुड़बुड़ाते हो, लेकिन ये बुड़बुड़ाना हमारे विरुद्ध में नहीं लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में है। In Numbers chapter 13, last few verses, and chapter 14, some beginning verses, we can see that how that many people, they were murmuring. Only 2 people, though they were suffering, but they did not murmur, Joshua and Caleb. Te kitab jengken kalau nang bakhalai ki bentai ki bakhado jang katu kalau nang bat kumjuru kalau nang bakhasa ki bentai ki besakman jang katu kalau nang ni pulia bakumno bagi kita ki breu ki laknyam percaya ublay bat nelain na tang argun bagi kita ki long Caleb baru Joshua. गिनती 13 अध्याय के आखिरी वचनों में और 14 अध्याय के पहले वचनों में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वहां पर केवल 2 ही व्यक्ति नहीं बुड़बुड़ाए, चाहे वे लोग कष्ट उठाए फिर भी वहां पर कालेब और यहोशू ने नहीं बुड़बुड़ाया। So all people, those who were murmuring, they were having death. That's why it is written they all died in the wilderness. Tikido bara ki breu ki baknyam ki dan ya kata ka jingyap kalau ya bandrung ki dena ma kata ka da tho ba bara ki la yap ha ka riklau. जो लोग कुड़कुड़ाए उनमें मृत्यु को देखते हैं और उसके कारण वे लोग सब जंगल में मर गए हैं। Joshua and Caleb, they also were not having any bread. They also suffered without water, but they did not murmur, and they were under subjection to the leaders. And like this, we see that how that they were having life, and they entered in the land of Canaan. But nei Joshua bau Caleb kiru kimsim la yo jing bam kimsim me ka mandi nei kimsim la knyum IT la ka jang jem ba la pendam hakita ki nang yalam ujang ki bat ni ikumno ba ki la yo pneng ki jang ku ba la yo bandrung sha kata ka ri ki jing kular kari kanan। लेकिन यहोशू और कालेब के बारे में देखते हैं कि वे लोग भी रोटी न पाए, वे लोग भी पानी न मिलने के कारण कष्ट उठाए, फिर भी वो लोग कुड़कुड़ाया नहीं लेकिन अपने आप को अगुओं के वश में किया, जिसके कारण उनमें जीवन प्रवेश किया और वे लोग कनान के देश में भी प्रवेश हुए। So in Philippians chapter 2 it is written that he emptied himself. Te ki Filipi kalau ka ba la tho ba ulapan sudai la dia। फिलिपियों दूसरा अध्याय में यीशु के बारे में लिखा है वो अपने आप को शून्य कर दिया। Those who will empty themselves, so they will be poor in the heart, and they will not have any argument, but they will suffer. Tiki to ki ba pensudai la dia kenlam dan kai ru ka kenlam kita ki ba pesaurat agadono jangki bar kenlam dan kai ru kata ka ba kenya knyum kenya nya ba kenya le persya। हम देखते हैं कि जितने लोग इस प्रकार से दिखाई देते हुए मन में दीन होते रहेंगे और शून्य करते रहेंगे, जिसके कारण वे कभी भी वाद विवाद नहीं करेंगे। So in 2 Thessalonians and chapter 2 and verse 4 we are reading that that is the nature of devil or antichrist. Te ka ba ar ki jang Thessaloni ka nang ka ba ar ka ba sang ni puli ba ka ni ka long ka ta ka jing long ka jang
u Chris lamler. दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय का 4वां वचन में हम मसीह विरोधी या शैतान के गुण के बारे में देखते हैं। Read this verse also. Who opposite and exalted himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Utau baile persha bor bapen serong ilade persha ya borro balakor blay lade baju mane karhado ba usong ha tempelu blay udale blay ilade. Khat basau. So these are the natures of Antichrist. Tiki ni ki ta ki jinglang jong Chris lamler. ये मसीह विरोधी के स्वभाव है। So now we can see these natures are working in so many people. Bat mentang laban I ba ka ba kum kini ki jinglang ka trei ki ba bon ki brio. इन दिनों में हम देखते हैं कि ये स्वभाव कई लोगों में काम करता है। So this is the death that devil have brought to the Adam and Eve. Bat ka ni kalong ka ta ka jingyap ya ka balawan lam au Adam ba ka im. ये वही मृत्यु के कारण हुआ है जो शैतान आदम और हव्वा के बीच में लाया था। So when you know about Jesus, how he suffered and he did not rebelled, so you are growing in the life. Ti ba pi tip sa pang Jisu kum no bu la sha shitam bat se le persha la ka no ka bentaru wen nang san na ka ta ka jingim ka jang pi. जब आप यीशु के बारे में जानकारी पाते हो कि उसने कैसे कष्ट उठाया लेकिन बलवा नहीं किया, तब आप ही उसके समान बदलने लगते हो। So see that and nowadays everywhere we see that how that this work of devil is growing. That's why his nature is everywhere it is ruling. But in the church, if you follow the doctrine, really you can overcome the death and you will be able to receive all the life and you will be able to receive the nature of Lord Jesus Christ. Bat haka ni ka perthai menta kini ki jinglang ki trei bor ba berbelah keleng satlak ki jaka ba kumno ba ki brio ki le persha ba kita ki jinglang ki jong setan ki dan ki jing ki jong ki ndai la da pi IT le de ya ka ban pen sudan le de ba ka ban pen red le de ba ban ne ka man ki jong ble ki jinglang ki jong Chris pen sai apne ne ki jim ki jong pi. इस संसार में हम देखते हैं कि बलवा करने वाली स्वभाव और मृत्यु फैल रही है, लेकिन कलीसिया में आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करके कलीसिया में दिखाई दोगे तो आप में जीवन दिखाई देगा और आप मसीह के समान बढ़ सकते हो। Now this is the time that whatsoever you have heard, you should accept that. Now this is the time whatsoever you have heard, you should accept that. Ti ke ni ke kata ka por ka ba ma pi pele ya so ba pi dan kam man pinang ne ka ta. यही सही समय है कि जो कुछ आपने सुना है आप उसे ग्रहण भी करना चाहिए। The word of God which is needful to you, that have reached to your heart, now you humble yourself and harden not your heart and receive the word of God. Bat ka tien ka jang blay ka ba pi dan kam ya ha ka jim ka jang pi menta ka wan se pi dan kam ya ka ban ple la ka jang ki no bat ya ka ban preng ya ka tien ka jang blay. जब आपके लिए जरूरत वचन प्रचार किया जाता है और जिस वचन आपके हृदय को स्पर्श किया है, अपने हृदय को कठोर न करते हुए आप इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। So you receive that word of God. Preng ya ka tien ka jang blay. आप इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। Word of God is with the grace. Ba ka je ka tien jang blay ka na pi ka je. परमेश्वर का वचन अनुग्रह के साथ आता है। Grace of God will come upon you. Ka je ka jang blay kan wan la jang pi. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। All please stand. Sai bara sobhani ne yang. Hallelujah. Praise